Hello, ladies and gentlemen. This is Mahwash Ajaz. You're watching me on YouTube and you're listening to me on Spotify. And I'm back with my bestie, Sadaf Haider, my drama bestie, Sadaf Haider, who's sitting all over from America. वहाँ बैठी हुई है वो और मैं बैठी हुई हूँ दुबई में और हमेशा की तरह हम बात करें हमारे फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में। सदफ, क्या है आपकी टॉप लिस्ट इस दफा? हमें इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं सदफ, मुझे इतना मजा आता है वो कमेंट्स पढ़ के। और Hmm. आई थिंक दे गिव मी सो मच फूड फॉर थॉट। व्हाट अबाउट यू? Yeah, I really enjoy the comments a lot, and कई बार हम लोग उनसे वो discussion कर लेते हैं, and हाँ। I think they kind of give us a different perspective, which we sometimes हमें समझ ही नहीं आती, and of course our audience is really well informed. वो मुझे correct हम्म। कर देते हैं कि हम्म। नहीं सदर it starts so and so, नहीं फलां ने ये किया, so it's good, and I love that interaction. I really enjoy it. Mm. मुझे तो लगता है मैं तो बहुत सारी गॉसिप मिस कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट रियली टेक पार्ट एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट होल थिंग। Mhm. तो मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है कि फॉर एग्जांपल जफा में मावरा हुसैन का जो किरदार है वो पहले कुबरा Mhm. खान को ऑफर हुआ था अपेरेंटली समबडी हैड Really? कमेंटेड दैट। Yeah. सो आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज बट आई गेस वील फाइंड आउट आल्सो इन द नेक्स्ट स्लीव ऑफ कमेंट्स दैट वी गेट। I तो think with a lot of sorry interrupting you, but हम projects ना हम्म। वो ऐसे जैसे चेस बोर्ड बदलता ही रहती है ना, बिल्कुल कभी हाँ। एक होता है कभी दूसरा, एंड देन इन द एंड पता चलता है ये कास्ट हुए हैं। हाँ, और फिर जब तक आप देखते हो मुझे लगता है कि जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो आप देखते हो आप कहते हो ओके आई डोंट थिंक दैट ये जिसके पास गया है सही है, you know. हम्म। So I think Jaffa is one of that, and I think that it's an important turning point in Jaffa. I think it's a great time to start talking about Jaffa. तो सर, what was your take on the recent episode जिसमें हमने देखा कि एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन था between मावरा कैरेक्टर एंड हर पेरेंट्स। फिर इसी तरह दीबू और नुमेर का एक वियर्ड सा टर्न, वियर्ड शॉकिंग सा टर्न आया है जिसमें वी हैव फाउंड आउट that Numair is unable to father a child. So, what was your take on it? What was your initial most reaction to it? You know what? I sometimes think that writers take on too much. Hmm. कुछ ज्यादा ही टॉपिक्स ले लेते हैं, and it does get, खिचड़ी सी बन जाती है, as I felt in ZARD पत्तों का बन as well. Hmm. And but according to the makers, this is a real story. Hmm. So, and this is something I think you and I have discussed earlier. Hmm. कि okay, real life में incredible चीजें होती हैं, and you go, oh my Yeah, God, truth is how did stranger that than happen? fiction. Yeah. Right. हाँ. But what it happens though is, and I think on screen though, you need a little bit more justification. Hmm. Right? You need a little bit more foreshadowing. You Hmm. need to build up the credibility for some reason. Now, I think they did show us that Numair was having problems, some kind of medical issue. I Hmm. think he's having some fertility issues, and that may explain why he didn't want to have children in the beginning. And that may explain his reluctance towards marriage, Yes. right? But infertility is not the same as, say, impotence, perhaps. Hmm. Infertility is something that can be cured. I mean, there are low chances and there are high Hmm. chances. But खुदा की जात बहुत रहीम व करीम है. I know a lot of people, not a lot, but several people, चलो Hmm. 10 साल के बाद उनका बच्चा हो गया, Hmm. 12 साल के बाद उनका बच्चा हुआ, and then I know people जिनका कभी नहीं हुआ, Hmm. right? Hmm. So it is a bit of a Russian roulette with these treatments, and कुछ Hmm. खुदा की भी चाहिए. Hmm. So no, not unusual, but it's like, okay, let's add this. Hmm. I mean, as to the track between क्या उसका नाम है, Dr. Zara Zara and Hassan. and Hassan. I mean, that was, I can't, I mean, like, that was very triggering and shocking. यू राइट, आई थिंक दैट ऐसा टॉपिक जो है उसको थोड़ी फोर शैडोइंग बनती थी, थोड़ी सी आई थिंक उन्होंने दी है अपनी तरफ से। वो जो पूरा खत लिखता है नुमैर के, आई रादर जस्ट लीव, आई डोंट वांट टू बी मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट, जब वो शुरू में बात Mhm. होती है और फिर फाइनली जब वो एक ऐसी सिचुएशन में जाता है जहां वो एक ऐसी लड़की को देखता है जिसकी इतनी प्रॉब्लमैटिक हिस्ट्री है। और हम भी पूछते थे कि भाई ऐसा कौन सा मर्द है जो इस तरह की सिचुएशन में, ये हम दिल दे चुके सनम वाली सिचुएशन में विलिंगली वॉक इन करता है। तो उसने किया और उसका रीजन अब शायद हमें ये रिवील हुआ है। आई ट्रूली विश कि मैं कुछ ड्रामे देखूं जो मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होके देखूं। ऑल्दो इंटरनेट पे होके कुछ चीजें देखने का बड़ा मजा है, लेकिन इंटरनेट पे जैसे मैंने ये कुछ थ्योरीज पढ़ी थी अबाउट नुमेर एंड दीबू और
ये इम्पोर्टेंसी वाली थ्योरी मैंने कहीं पढ़ी थी. आई थिंक दैट टुक अवे अ लॉट ऑफ द सरप्राइज आई वुड लाइक द मे बी द मेकर्स वर एक्सपेक्टिंग कि नहीं ये लोगों को एक फील होगी बात. तो आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये चीज थी, और मैंने क्यों पढ़ा और मुझे क्यों लोगों ने बताया और मैंने कहाँ देखा ये, आई डिडंट वांट नो. लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेट्स if we ignore that part and we just look at it for what it is and what we saw, I think that is an important issue. I think it's a very critical issue जिस पे कुछ ड्रामों ने बात की है. But again, the brilliance and the good thing about Jaffa is that it's not doing it for chart busting. It's actually doing it to tell a story in a nuanced way, in a way that can teach the audiences and the society about like, a thing or two about what men go through in our society, जहाँ पे masculinity के ऊपर या मर्दानगी पे इतना फोकस है, वॉल चॉकिंग है पाकिस्तान में जगह जगह, उसमें मर्दानगी बढ़ाने का और मर्दानगी की जो इलाज हैं, मर्दाना कमजोरी। शर्तिया इलाज जो हमारे यहाँ मौजूद हैं दीवारों के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं क्या बिल्कुल हमारी इनसिक्योरिटीज पे प्ले करता है. जो ये पूरा ट्रैक है मर्दाना इनसिक्योरिटीज पे, और फिर वो इनसिक्योरिटीज का रिजल्ट जो कि औरतों पे इवेंचुअली आता है. तो आई थिंक जफा की अच्छी बात ये है कि वो ग्रेटिफिकेशन के लिए इस तरह के टॉपिक्स नहीं उन्होंने उठाए, वरना वो क्या कर सकते थे कि वो इस चीज को बहुत शुरू में दिखा देते एक, ताकि क्योंकि पता होता है ना मेकर्स को, चैनल्स के पास अब ये फॉर्मूला है ना कि शुरू की 3 एपिसोड में आपने ऑडियंस को घेरना है और शुरू के 10 मिनट में आपने ऑडियंस को बताना है कि ओए ये है कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम है, यूर लाइक अच्छा ओ अब तो देखना पड़ेगा क्या हो गया है. लेकिन देखे ना हम किस एपिसोड पे बैठे हुए हैं, हम 29 30वीं कितनी कौन सी एपिसोड होगी, 24 25 आई डोंट नो. लेकिन It's बहरहाल quite a way. I mean, like इट्स we're in the, I think we're in the third quarter. या जैसे वो वाइंड अप करने वाला क्वार्टर नहीं हाँ, होता तो वो वाइंड उसमें। अप में वो मिड 20s तो है ही ना कंफर्म, ऐसा तो नहीं है ना कि शुरू के एपिसोड्स हैं. तो मुझे ये चीज उनकी लगी कि हाँ ओके नो मे बी दे रियली जस्ट ट्राइंग टू टेल द स्टोरी. आई फील लाइक व्हाट आई एम प्रेइंग इज दैट नुमैर डजंट टर्न इनटू अ रेड फ्लैग, कि वो अपनी बीवी को मिसट्रस्ट ना करे, बिकॉज मैस्कुलिनिटी पे अटैक काफी बड़ा अटैक होता है मर्द के लिए, और बड़े से बड़े मर्द जो हैं वो चट्टान भी हों तो वो ढेर हो जाते हैं. I don't think they will ruin the mayor's character, but you never हम्म. know, right? यू Because नेवर नो, यू डोंट really, नो. yeah, but हम्म. I'm hoping they won't ruin Numair's character. There are some men that would react very suspiciously. लेकिन हम्म. Numair doesn't look like that. I think throughout, अच्छा वे ना ये जो red flag, green flag ये nonsense है, right? इंसान इंसान होता है, गुस्सा चढ़ता है, किसी को भी चढ़ जा सकता है, किसी को भी शक हो सकता है, हम्म. लेकिन it's what you do. And हम्म. this is the difference between a good person and a bad person, हम्म. right? It's what you do with it. गुस्सा इनिशियली किसी को भी आ सकता है. यू सी नुमेरा ही इज वॉकिंग आउटसाइड, लेकिन वो सोचता है अपनी रैशनल ब्रेन के साथ, तो काम डाउन होके अपनी बीवी के ऊपर नहीं करता वो चढ़ाई के, तुमने हम्म. ये फलान हो गया मैं तुम्हें अभी घर से, नो. He thinks about it, he's calmed down. Even when that young man downstairs, he sees him, or, Dibu does the idiot thing of slapping him. हम्म. Instead of taking the young man seriously, he listens to his wife. He कहता अच्छा हाँ, वो हम्म. हो गया होगा आप दोनों का झड़प. Actually, it's their relationship which is difficult to swallow and difficult to हम्म. understand, because they should have spent more time on Dibu and Numair building their relationship. Why हम्म. does Dibu want to stay with him after committing suicide for another guy? हम्म. Yeah, you understand? Like I feel like that they should have given a couple of episodes in which Dibu and Numair, instead of getting into an intimacy, right, they had discovered each other as people. Then हम्म. I would have said, And then maybe liked each other for who they are and then built it on. Okay, okay, I take right, your point. because Okay. what I find is with Dibu, that she suffered a lot. It takes a lot. She's in the hospital. They were pumping out her stomach. उसने खुदकशी की. Terrible parents. अब भी उसे ignore कर रहे हैं. हम्म. Right? And I'm thinking, wouldn't it be nice if Deepu had time to step back and think about who she was? And unfortunately, we see this play out in all our dramas. कि हम्म. लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है या दिखाया जाता है बेवकूफों की तरह, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, हम्म. राइट. वो बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर नुमैर अच्छे इंसान निकले, एंड ही इज वंडरफुल, एंड वो नहीं है वो राम निकले रावण ना निकले, राइट. हम्म. हम्म. But let us be honest. That's हम्म. not always the case, and हम्म. particularly in a forced marriage. So हम्म. still, I think this is one of the reasons that a lot of us still have reservations and are still waiting कि ये क्या हो गया, because they weren't allowed to develop a relationship.
हम्म and it was Deepu pulling all the strings. अच्छा अब मेरी शादी होगी, अच्छा मैं ये अब करूंगी, right? So हम्म I kind of find it difficult. That's why. हालांकि both actors are doing a great job. Deepu's हम्म acting that manic pixie, वो नहीं ड्रीम है, गर्ल, हाँ। being हम्म very lively, which is so natural to her. या And wonderful actress, and same Numair is being that cautious guy, and they do actually make those screen characters make a great pairing. Because हम्म a girl who is a little bit lost, and a हम्म guy is a little older, and he wants to take care of her, and that might actually sometimes be a good match, you हम्म know. हम्म So, but they haven't emphasized that. They've like, हम्म gone on with the relationship. And I don't know what to say about Dr. Zara and Hassan. I'm just so mad at both the dadis that I think they should be in jail. I think I said this last week. Like, and yeah. these are the attitudes, unfortunately, that people have. Yeah, and this is But why domestic violence prevails also. and you noticed in one of the, I think in the teasers, she is going on and she's saying कि इसको वो बुरा आदमी नहीं है, उसको बेल दे दो या समथिंग, हम्म क्योंकि वो जेल में होता है ना. हम्म। नंबर वन, कभी ये आदमी बेल नहीं जाते, दे नेवर गो टू जेल, जेल, या वो राइट. बेल प्री अरेस्ट हो जाती है, हाँ। Right. So these people are very rarely held accountable, and हम्म I understand that it's good that they're going to focus on Hassan's rehab, perhaps, right? But हम्म I would like to see them focus on Zara and the rehab that Zara's going to have to go through, and I hope हम्म। they don't miss that. That's all I'm asking. Yeah, I that's hope they very don't. crucial. That's very crucial. Zara's walk back into life and how victims of domestic abuse kind of um, have to pick up themselves and then rebuild their trust on other people. All of those, small things and big things. I think that's a great point. I slightly disagree about Nemo and Dibu and Numair. Nibu. So I think मेरा थोड़ा सा disagreement मतलब Finding आपसे Nibu. ये नीमू that's a good portmanteau. आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने दिखाया है कि वो उसको हेल्प करता है पढ़ाई में, वो कुछ मोमेंट्स उन्होंने क्रिएट करे हैं, Hmm. ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये इससे जो मैं अग्री करती हूँ आपकी वो इस बात से, वो ये कि हाँ, थोड़ा सा अगर दोनों बैठ के आपस में एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ हेडिंग स्ट्रेट फर्स्ट इनटू हर falling in love with him and realizing, oh my god, he's the guy and Muiz is nobody now, वो आई थिंक थोड़ा सा रश था, वो आई एग्री। लेकिन जो ओवरऑल आई थिंक वो जो मोमेंट्स उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की है, जिसमें वो उसको कहता भी है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इंपॉर्टेंट है, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा। तो वो मोमेंट्स हैं अच्छे, लेकिन वो क्योंकि थोड़े से, वो शायद एक ओल्डर मैन है, वो इतना यंगर मैन नहीं, वो बात ही इस तरह करता है, तो वो शायद उस तरह क्लिक नहीं होते। लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो आई फील लाइक हमारे यहाँ ड्रामे ये भी मिस कर जाते हैं ये ट्रैक पूरा, कि एक मर्द, और जो हम कहते हैं कि हम सुनते नहीं है मेल प्रोटैगनिस्ट को ये बात करते हुए कि वो अपनी स्पाउस, सिग्निफिकेंट अदर, किसको किस तरह उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने पे वो क्या किरदार अदा करते हैं। ज्यादातर वी आर, एंड रियलिटी में भी ये होता है कि मेन टेयर डाउन देयर स्पाउसेस बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इनसिक्योर फॉर वट एवर एक्स वाई जेड रीजन। और अगर उनकी वाइफ उनसे आगे बढ़ जाए, या उनकी वाइफ उनको कोई और वाइफ या सिग्निफिकेंट अदर इवन, अगर उनके साथ अगर उनको कभी डर लगे कि यार ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, या ये मुझसे प्यार नहीं करती एक्चुअली में तो जबरदस्ती मेरे साथ इस रिश्ते में, तो वो क्यों उसके लिए इतनी उसकी बिल्डअप और उसको इतना हाइप अप करेंगे? वो नहीं करेंगे, बोले ठीक है भाई, ठीक है, मैंने एहसान कर दिया तेरे ऊपर शादी करके, अब तो भुगत जो है जिंदगी। सास से भी ना लड़े, मतलब अपनी माँ से क्यों लड़े उस ऐसी लड़की के लिए, इसी पे एहसान जताते रहे कि भाई मैंने कर दिया। तो आई थिंक इन दैट वे नुमैर बहुत अच्छा रोल मॉडल है। और आई थिंक एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होती है सदफ के, जब हमारे यहाँ रोमांस को वो बना दिया जाता है कि आंखों में आंखें डाल के पलक झपकते हुए यूं 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 करते रहे, स्लो मोशन में पीछे वायलिन बजते रहे, तो वही रोमांस होता है। मुझे लगता है रोमांस ये भी होता है कि गाय इज हेल्पिंग द गर्ल स्टडी, or he's helping her, dropping her and picking her off, and skipping meetings to be with her, or skipping work to be with her, or helping her in whatever crisis or make believe or even non crisis जिम्मेवारी निभा रहा है, जो मर्द हाँ। अपनी जिम्मेवारी निभाता है बजाय इससे जताता है. आई हम्म थिंक दिस इज गुड एड. मर्द वो है जो जिम्मेवारी निभाता है. हम्म मर्द वो नहीं है जो जताता है, डिड यू फेवर, मैंने हम्म। तुम पे एहसान किया, हाँ राइट. हाँ हाँ, और वही वाली बात ना कि मैंने तुम्हें इजाजत दी पढ़ने की, भाई तुम कौन हो इजाजत देने वाले?
वो एक जीती जागती इंसान है जो अपने हकूक खुद लेके, अल्लाह मियां ने उसको जिंदा अपने हकूक लेके पैदा करके भेजा है। तुम नहीं हो कोई उसको हकूक देने वाले, ये अल्लाह ताला के दिए हकूक हैं उसके पास, जो एज एज ह्यूमन बीइंग वो डिजर्व करती है। तो और आप किसी को जब मैं कोई पेट रखती हूँ तो हाँ मैं उसको खाना पाना पानी दाना देती हूँ, मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग और एक स्पाउस स्पेशली पेट नहीं होता। एनीवे, digressing from what we were talking about, I want to come back to Hassan and Zara. जो आपने बात हम्म की ना कि आई रियली होप दे डोंट मिस आउट ऑन जाराज रिहेबिलिटेशन। एंड आई थिंक कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सदफ कि वो जो ये पूरी चीज दिखाएंगे इवेंचुअली कि हसन की रिहेबिलिटेशन या जो भी है वो क्या है। असल में हमारे यहाँ क्या होता है, कहानियों में भी हम सुनते भी हैं कि हमारे यहाँ होता है कि यार अच्छा वो बंदा था, वो बड़ा खराब बंदा था। ओके, हम्म खराब बंदा था, अब कहानी कहीं और चली गई। लड़की ने छोड़ दिया उसकी, तो उसको तो अब वो कहीं पड़ा हुआ है, अब वो ये कर रहा है, उसने दूसरी शादी करी, जो भी एक्स वाई जेड कहानी हुई। या हमने बिल्कुल ड्रामे के एंड में दिखाया कि वो कहीं उसको सड़क पे चलते हुए मिल गया एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक कि ये कितनी कम लोग एड्रेस करते हैं, या ये कितने कम ड्रामों ने इसको एड्रेस किया है कुछ ने, लेकिन कितने कम ड्रामे इस चीज पे एड्रेस करते हैं कि ये जो विलन आपने देखा 25-30 एपिसोड्स में, जितना भी विलन देखा, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ। और हमारे यहाँ ना एक और, आई रियली होप जफा डजंट गो देयर, हमारे यहाँ एक बड़ा वो वाला दिखाते हैं, पागल हो गया एंड में, पागल हो गया। Yeah, वो ना लेजी राइटिंग है। हाँ, बैंक्रप्सी दैट हो इज गई, लेजी सड़क पे आ गया, राइटिंग। वो खुद ही कुछ, तो कार्मा डिड द वर्क, यू द राइटर Yeah, डिडंट। yeah, yeah. ठीक You है, didn't do anything. यू डिडंट डू हालांकि एनीथिंग। karma, you will find that such men will find, I see them, हम्म। uh, they will find a second wife, third wife, अह, आराम से, right? और कोई भी बेवकूफ आदमी तैयार भी हो जाता है अपनी बेटी देने के लिए, डिस्पाइट नोइंग दैट पर्सन्स हिस्ट्री, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। ठीक है। तो मुझे जो लगता है, और आई डोंट थिंक ये जफा उस डायरेक्शन में जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि जफा इस पूरी चीज को एक्सप्लोर करे, जो कि आई थिंक करेगा। व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज जो अगली एपिसोड का जो टीजर है ना, उसमें वी सी द मदर कमिंग, Hassan's mother coming, Hmm. and appearing. Arjuman Rahim appears as the mother, and the Madadi is also saying stuff like अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा, समथिंग टू दैट इफेक्ट। सो आई थिंक कि जफा में अब थोड़ी सी होप है, मुझे थोड़ी नहीं काफी होप है एक्चुअली। एंड मुझे मुझे जो बहुत मेरे दिल को लगा सीन वो, और जो मेरे दिल को लगी बड़ी बात, वो जो अपने बाप से सॉरी बोलती है जारा, Hmm. कि आई एम सॉरी बाबा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, बाबा आप कहाँ थे। उफ You know, भाई। my husband said something very strong, profound the other day, हम्म। and when we were watching Jaffa, and I हम्म। was angry at Hassan, हम्म। and he said, "देखो, people have mental health issues. हम्म। You don't just throw them away. या वो या इंसान होते हैं, यू डोंट थ्रो देम अवे कि पीस ऑफ ट्रैश है तो अब हाँ बस खत्म, राइट? हाँ। सो एंड नंबर वन इज, देखो कोई चीज आपको अटैक कर रही है, एंड हम्म। दिस इज इन रिलीजन, इफ देयर इज अ स्टोन ऑन द रोड, हम्म। तो यू नॉक इनटू इट, योर जो ड्यूटी इज टू पिक इट अप एंड पुट इट टू वन साइड। बिल्कुल। ठीक है, इट इज नॉट डॉक्टर जारा's ड्यूटी टू हम्म। rehabilitate Hassan, यस यस। but it is her duty to at least point him in that direction. कि विच ही I don't डिड, want, विच ही because डिड। yeah, या। बिकॉज बाकी हसन का और उसकी फैमिली का है कि वो रिहेबिलिटेट करे, क्योंकि हम्म। हसन इज लाइक एन अनएक्सप्लोडेड फायर आर्म। या। जिससे भी आप कांटेक्ट करेगा, जहां जाएगा, ही विल बी एन इशू फॉर देम। हम्म। सो that's why we keep talking about therapy, 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 and all of this kind of stuff, because हम्म। we don't, right? एक लड़की से हो गया, दूसरी तीसरी चौथी लड़की से होना क्या जरूरी है? कितने So लोगों का घर that's why बर्बाद we go करेगा। on it. Yeah. नहीं, आई थिंक कि वो पूरी ट्रैक आई थिंक वो एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज आई थिंक वो उसी तरफ जा रहा है, और वो उसको जेल वेल करा दिया, एंड आई डोंट थिंक शी इज गोना गो बैक टू हिम। आई थिंक दिस इज द एंड फॉर देम, बट शी, Hmm. हर डायलॉग इज लाइक कि वो कर सकता है। एंड आई थिंक दैट आल्सो स्पीक्स टू द फैक्ट दैट, जैसे आपके हस्बैंड ने बोला कि वो इंसान होते हैं, उनका कहीं ना कोई डायरेक्शन तो होगा ना, मर तो हम उनको जाके पहाड़ से जाके फेंक तो नहीं सकते ना किसी को, कि एक लेकिन बहुत बड़ा एबिस ये है। बात क्लियर है, हम्म। क्लियर है कि जिम्मेवारी किसकी है। इट्स नॉट हम्म। योर्स, अनफॉर्चुनेटली। हम्म। हम लेडीज में एक सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, व्हिच हाँ, विल मूव अस अलोंग टू कभी मैं which कभी तुम। becomes our, yeah, या undoing, yes, आई which एम does गोना undo। फिक्स हिम। अगर हाँ। मैं ना रात को ना कई बार मेरा होता है, आई गो थ्रू, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ लेडीज विल आइडेंटिफाई, स्पेशली द एल्डेस्ट डॉटर टाइप्स, राइट? हम्म। कि अगर मैं ये ना करती तो ये हो जाता, हाँ हाँ, एंड आई कांस्टेंट। गॉट अ हिस्ट्री ऑफ दिस, मेरा कसूर क्या है। आई कॉल इट हाँ मेरा कसूर लिस्ट। हाँ।
अगर फिफ्थ ग्रेड में मैं ऐसे ना देखती तो ऐसे ना बोलती, तो अगर फोर्थ ग्रेड में मैं टीवी ना देखती, अगर हाँ। 10 साल पहले मैं ऐसे ना करती, हम्म। and you have everybody who has got a moral conscience has this list, right? It's one of the हम्म। hazards, right? जो हम्म। नहीं करता, they are a narcissistic psychopath, right? हम्म। But at the same time, हर चीज moderation में होती है. I'm sure हम्म। every woman is familiar with मेरा कसूर, and there are हम्म। some men who are that good as well. हम्म। So what I don't want is कि I would like for once that Zara, this my मेरी ख्वाहिश है कि हम्म। Zara the victim realizes she's a victim. हम्म। Nothing she could have done could हम्म। have changed this man, because हम्म। this man needs to change for himself. आपका यस। लाख प्लस्तर नहीं है जो उसके हर रील में इतना प्यार दूंगी, मैं इतना हम्म। प्यार दूंगी। मुझे नफरत है इस डायलॉग से। आप हम्म। प्यार जरूर दो, बट खुदा बनने की कोशिश मत करो। ऑल्सो जो ये जो एक होती है, हमने जो अपने लिए बना ली है कि मोहब्बत सब कुछ सॉल्व कर सकती है, मोहब्बत बुरे से बुरे इंसान को भी ठीक कर सकती है। नो। नहीं, नहीं, मोहब्बत बुरे से बुरे इंसान को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती, बल्कि जो बेचारा बेवकूफ आदमी मोहब्बत दिए जा रहा होता है, वो बुरे से बुरा इंसान उस गधे को अच्छी तरह इस्तेमाल करके उसको अब्यूज करता है। तो ये जो बकवास है जो हम लोगों ने फीड की है लड़कियों को, रोमांटिसाइज की है। रोमांटिसाइज की है, सबसे पहले तो इसका कबाड़ा करना चाहिए। और आई थिंक जफा में काफी हद तक इसका कबाड़ा हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को, लोग रीवैल्यूएट शायद कर सकें अपनी रिलेशनशिप। लेकिन सदाफ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही बीच में, ये जो आपने एल्डेस्ट डॉटर और मेरा कसूर लिस्ट वाली जो बात है ना, ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, इसमें it is a normal reaction of people who have suffered abuse. फर्स्ट डॉटर, सिबलिंग, फर्स्ट चाइल्ड वाला तो है ही है। लेकिन वो जैसे आप कहते हैं ना, जो पैथोलॉजिकल हो जाता है। और पैथोलॉजिकल कब होता है? जब हमारे यहाँ तो बना देते हैं लड़कियों को, ऐसा पागल बना देते हैं कि नहीं बेटा तुम करो ना, ठीक तुम करो ना, तुम बात करो ना, तुम ऐसे करो ना। और अभी रिसेंटली मेरी अपनी अम्मी से इस बात पे लड़ाई हुई है। मैंने अपनी अम्मी से इस बात पे लड़ाई बेचारी कर ली। आंटी। हाँ आंटी जी से मैंने आपकी लड़ाई कर ली। मैंने कहा अम्मी आप मुझे देखें, मैं इधर से भी एक बात सुन रही हूँ, मैं इधर से भी बात सुन रही हूँ, सामने से आप मुझे ये बात कह रही हैं। तो वो कहने लगी कि, और ऑनेस्टली आई डोंट थिंक हमारी मदर्स को ये रियलाइज होता है। तो आई थिंक हमें भी अपनी मदर से, और मैं ये नहीं कम्युनिकेट करती थी, मैं वही चीज ना शर्जीना पे आते हैं अब, इंटरनलाइज किए जा रही हूँ, इंटरनलाइज की जा रही हूँ, नहीं मैं ठीक कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा मैं ये भी करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा मैं इसको भी अपनी टू डू लिस्ट में डाल लूंगी, तो सब ठीक हो जाएगा, कोई और नहीं कर रहा ना, मैं कर लूंगी। आई मुझ नो। में कमी थी, वरना सब सही होता। हाँ, मेरे 8 हाथ क्यों नहीं है घंटे में, वक्त में, एक दिन में 28 घंटे क्यों नहीं है? ये 4 घंटे एक्स्ट्रा मुझे सोने को मिल जाने तो मैं 24 घंटे काम कर लेती। ये, और आपने बिल्कुल सही कहा, एल्डर्स डॉटर्स, एल्डर सिबलिंग्स, वी कैन ऑल रिलेट एंड आई रिलेट। सो मुझे लगता है जो देख भी रहेंगे वो रिलेट कर सकते हैं। तो शर्जीना के अंदर, जारा के अंदर, ये प्रॉब्लम्स उनके अंदर हैं। और हमारी सोसाइटी इनको फीड करती है, और हमारी मदर्स रियलाइज नहीं करती, हमारे फादर्स, हमारे साथ के जो खालाएं फुप्पोएं जो भी हैं, वो रियलाइज नहीं करते कि वो अपनी बेटियों को ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी मुझे शायद कर रहे हैं। मजे की बात आपको सुनाओ। My mother, when हम्म। she was diagnosed with Alzheimer's, it हम्म। was very difficult, mental illness, that kind of बिल्कुल thing, बिल्कुल handling her. बिल्कुल। उनका हम्म। थोड़ा सा aggressive case था. हम्म। One of my khalas advised me to get a divorce and live with my parents. Because she didn't wanna, वो जो support system एक village का होता है ना, हम्म। तो वो she didn't wanna do her part, so वो कहती थी हम्म। ये आपकी जिम्मेवारी है, तो हम्म। छोड़ दें अपने मियाँ को और बच्चों हम्म। को. So I हम्म। looked at her and I said, okay. हम्म। But this is how sometimes our culture is, because देखो असल में तो बात ये है कि everybody supports each other. या या। And what happens is a lot of people डंडी मार देते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं करना. So हम्म। one person gets a lot of the load. So हम्म। you'll find it's always बेचारा जो एक आध डिवोर्स्ड होता है, जिसकी रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हुई होती, वो माँ हम्म। बाप के साथ रह रहा होता है. So हम्म। these things happen. But getting back to Dr. Zara, Yeah, getting back to Dr. Zara and getting back to that Sharjina, the syndrome, Regina, the hmm, syndrome, the syndrome that we said, no, the my Kusur list. I can do it, and I can मेरा do it. कसूर है if I can't. That my Hmm. fix it syndrome, let's call it that, the Hmm. women's fix it syndrome. Men also have a fix it hat, but I think that, Yes. what men are able to do, Sadaf, is that they are able to compartmentalize. Women let it consume them.
I'll give you two scenarios. आप बात करें शर्जीना के बारे में, and I'll give you the men's angle where they Hmm. become Mr. Fix It. Yeah, that's a good one because you know why? Hmm. I'm kind of like, although I understand both like Hmm. so well, but I'm kind of like Team Sharina, you know. Yeah. You can be Team No, no, Mustafa. I am definitely Team Shajina, but You I'm are? not. You're right. Right Hmm. now, I sometimes am on the man side. I Hmm. am not on Mustafa's side. मुझे Hmm. मुस्तफा का behavior total गलत लग रहा है, but I know the kind of I have to fix it pressure that Hmm. men face, particularly Hmm. men in the diaspora. Maybe Hmm. it's different for other people, but No, I I think feel the pressure. Desi men are like this. Desi men are totally like this. And I yeah, so let's dive into Kabhi Main Kabhi Tum Okay. at this point. I think कि Kabhi Main Kabhi Tum की brilliance जो है वो ये है कि वो जो modern marriage dysfunction है उसको कैप्चर करती है। और मैं हम आई थिंक सदफ हमने कुछ सेशंस पहले ये बात की थी कि कभी मैं कभी तुम का इनहेरेंट मैसेज जो है वो एंटी कैपिटलिस्ट है। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे राइटर्स जो हैं वो एक एंटी कैपिटलिस्ट एंटी मटेरियलिस्ट मैसेज लिखते हैं। एक तो ये बात हो गई। होना भी चाहिए because our society, the biggest problems in our society, हम्म। and I think for every, वो ना एक satisfaction, इतना कुछ होगा हम्म। and satisfaction नहीं है। तो सदा ये तो I- रियलिटी है ना, ये तो एक रियलिटी है कि आप अगर अगर दुनिया में पैसा हर चीज का हल होता, मैं ये नहीं कह रही कि पैसा हर चीज का हल नहीं होता, पैसा बहुत सारी चीजों का हल होता है। लेकिन अगर पैसा हर चीज का हल होता तो फिर दुनिया में सारी बीमारियां जो हैं वो फिर अमीरों को नहीं होती, अमीरों को भी बहुत बीमारियां होती हैं। हाँ, वो बेस्ट हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बीमारी होना और बीमारी का फेस करना ये तो फिर एक ट्रॉमा जो है वो तो ट्रॉमा ही है ना। तो कुछ चीजें ह्यूमन कंडीशन का जो हिस्सा है, जो कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अल्लाह ताला ने जो इंसान की किस्मत में लिखे होते हैं और जो एक इंसान के होने पे वो जो एक बोझ डाला हुआ है वो तो है। तो आई थिंक कि कभी मैं कभी तुम के अंदर जो एक इनहेरेंटली एंटी कैपिटलिस्ट मैसेज है ना, कि एंटी मटीरियलिस्टिक मैसेज है कि कभी कभी पैसे की दौड़ में इंसान मर्द स्पेशली बहुत दूर भागता है, बहुत तेज भागता है, और उसको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है अगर वो वक्त पे अपने प्यारों की बात ना सुने। उसका बैकग्राउंड फरहत इश्तियाक ने और पूरी टीम ऑफ कभी मैं कभी तुमने दिखाया कि देखो वो एक आया ही इस पॉइंट से था जहाँ पे मटेरियल और अर्निंग के ऊपर सारी वैल्यू थी, वैल्यू सिस्टम ही सारा उसी पे बेस्ड था कि तुम ज्यादा कमाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारी बीवी की इज्जत होगी, तुम्हारे घर वालों की इज्जत होगी। मैं एक और मुस्तफा पैदा नहीं करना चाहता जो वो डायलॉग बोलता है, इट्स वेरी टेलिंग। On the same side, what again I find very brilliant about कभी मैं कभी तुम, which जो ट्विटर डिस्कोर्स मैंने देखा जिसके बाद मैंने कहा यार हैं ये कौन लोग हैं, ये कैसे बातें कर रहे हैं मैरिज के अंदर। एंड आई वांट टू से दिस टू द वुमेन हु आर मे बी नॉट मैरिड येट एंड हु आर फीलिंग कि यार ये क्या है, अब तो वॉकआउट कर जाते हैं। मैं एक बड़ा अच्छा कोट कहीं पढ़ी थी कि किसी ने लिखा कि मैं जब पुराने कपल्स देखती हूँ, ओल्ड कपल्स होल्डिंग हैंड्स टुगेदर और वॉकिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, वेरी सीनाइल कपल्स, तो आई वंडर हाउ मेनी टाइम्स दे हैव फॉरगिवन ईच अदर ओवर द इयर्स। तो marriage does have these kind of eruptions and fights and moments, and I think that that's the brilliance of Farhad Ishtiyaq and the whole team of Kabhi Main Kabhi Tum. Big round of applause to Badr Mahmood, to Hania Amir for their work here, because and Fahad Mustafa, that one expression where he turns around and looks at the child, where the child is that child is crying and he has that That was kind expression of on his, that heartbreaking, was yeah. oh my God, like तो फहद तो कमाल है ही, और हम बार बार ये बात कहते हैं फहद के अच्छा, अंदर have जो। you noticed they seeded the beginning episodes with him? पहले वो बच्चों की तरह लड़ रहा होता है, फिर वो बच्चों हाँ। के साथ खेल रहा होता है। हाँ। So he does actually enjoy children, but He's a child it is his himself in many natural. ways ना। Yeah, या। yeah, he is. हम्म। He's the child. He's been treated like that. हाँ। So, but उस- I think I'm not going to defend Mustafa, but हम्म। what I would say is what Mustafa's biggest thing is not using logic. हम्म। उसने अपनी अना और हम्म। ईगो को आगे सामने रखा है एज अ गॉड, राइट? You हम really लोग, think so? यस ही हैज, हम्म। बिकॉज ही इज सो हर्ट। एक तो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया, ठीक। टेरेबल, हम्म। राइट? बीइंग थ्रोन आउट ऑफ योर हाउस, Being slapped एंड by your ये father। दैट, और इतना बड़ा इल्जाम। फिर हम्म। उससे उसके बाद शर्जीना का फादर कैन नॉट कीप हिज माउथ शट। मेरी बेटी, मेरी बेटी, हाँ। भाई वो भी तो किसी का बेटा है, राइट? हाँ। And you get the impression that Shajina's father is not
it doesn't actually believe that Mustafa might be innocent. मुझे थोड़ा हम्म। सा, have you noticed, ये obviously इस बात का तो अलग रखे ना, इस हाँ। टाइप डायलॉग यूज करता है तो उसको थोड़ा सा शक होगा. So he's taken that wounded ego and हम्म। set it between him and Sharjina. हम्म। And what he's doing is now he's healing his ego. मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा. तो हम्म। that's not how you do it. और फिर इज्जत मिलेगी मुझे, फिर सब मेरी इज्जत करेंगे, हाँ ठीक है। That's not how you do it, Adil. And he's doing it almost subconsciously. He's हम्म। trying to be selfish like Adil. हम्म। And I'm thinking that instead, if he had made contact with, चलो मुझे नहीं पसंद करे, बेटी तो उनकी है. हम्म। तो Sharjina, I'm dropping you off for a few days. तुम्हारी तबीयत नहीं सही है. And everything would have been fine. लेकिन हम्म। he is even angry that Sharjina के घर से सालन आया. हम्म। हम्म। So I can see Sharjina's point कि वो घर क्यों नहीं छोड़ के जा रही. When you हम्म। love someone, you love everything about them and you don't या। want to hurt. या। So it's not just a question of she's being a good girl. What हम्म। she's doing is she's working hard on her relationship. कि हम्म। नहीं पसंद करता वो मेरा वहां आना जाना तो चलो मैं नहीं जाती. हम्म। And this is the least I can do. अच्छा, and I get these comments from men. वो कहते हैं भाई औरतें तो जंगों के महाज पे जाके बच्चा पैदा करते थे. तो हम्म। मेरा दिल करता है मैं कहूँ चलो आप चले जाए ना तो वहां जाके बच्चे पैदा करें. क्योंकि देखो some of us just can't do it. तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ अस कांट this डू इट, is हु why आर दीज so many वुमेन? children, yeah, ये जंगों के so महाज पे many, कौन पैदा कर रहा है बच्चा? जो बस वो डायलॉग है ना खेतों में बच्चे पैदा करके तो हाँ वो तो ऐसे कोई अच्छी बात तो नहीं कर रहे, कोई हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए क्या औरतों के Yeah, लिए? but only men can say these things. And then my answer is to that is हम्म। women, number one cause of death for women was childbirth, या। even in the United States. या। या। Now, या। because they don't get postnatal prenatal care, या। so because of the healthcare system, हम्म। so childbirth is a leading cause of death for women. So हम्म। all that money, all that stuff that you're doing, it's pointless, right? हम्म। थोड़ी सी अपनी ego को कम करें. हम्म। And okay, you're a single couple, अपना हम्म। थोड़ा सा accept help from other people. कुछ हम्म। नहीं होता. हम्म। And that is what is, I think Farid Ishtiaq was talking about the levels of love, हम्म। right? हम्म। Throughout Unsiyat, then there was something else about Junoon or Phir Fana, हम्म। right? And what it is when you, Fana, it not necessarily means death, is when you kill your ego. हम्म। 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 Right? And people wanted to meet death, but हम्म। what it's about is killing your ego. And I think that's what we're gonna learn. I'm so impressed by this writing, so हम्म। impressed by the entire team. हम्म। But let me say that Badr Mahmood could not resist. हम्म। Did you see the party scene that he set Yeah. up? Like, Yeah, I he saw could your have tweet also. done, yeah. And then that vile poisonous green dress, and she had combat boots Business underneath. green. Which I Yeah. am like, Naima, look, you've been so stylish throughout. अब क्या हुआ? No, किस I don't think she was very लेने का stylish क्या throughout. आपको? No, Yeah. her style has always been off. I mean, she's doing such a fab job generally. मगर मुझे उसका Yeah. स्टाइल कभी भी नहीं लगा ऐसा कि नहीं, that मुझे तो अच्छा लगा. I नहीं. like the blue dress of her and Adil because their scenes are such absolute magic because they hate each other, but And they're ऊपर से hateable as characters. baby, I love हाँ. you, हाँ. right? And as And you say, whereas it's the dance of the whales, and what is it that you call it? yeah, Hmm. huh? Sorry, That dance of yeah, the. seven whales ना. हाँ. So what it is finally सातवां पर्दा उठने वाला और रियलिटी आने लगी है. Yeah. And but मुझे बदर का हुआ कि ग्रीन ड्रेस रेजिस्ट नहीं हुआ उनसे ना. तो अच्छा यार, मैं मैं तो नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा मेरा इत्तेफाक जो आपसे नहीं है वो इस पे है कि आई डोंट थिंक इट्स हिज ईगो. आई डोंट थिंक it's his it's simply this obsessive need to be the man that he thinks will be the good father or the good husband. And I think what I found important that stood out for me was that men, और हमने इस पे थोड़ी सी बात पिछली दफा की थी और वो खुल के पूरे इस एपिसोड पिछले 2 एपिसोड में इतने अच्छे से दिखाया उन्होंने कि ये जो हमारे यहाँ वैल्यू प्लेस किया जाता है ना मर्दों के ऊपर, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, बचपन से नौकरी अच्छी, पढ़ाई अच्छी करो ताकि नौकरी अच्छी करो ताकि पैसा कमाओ. तो जो वैल्यू हमने प्लेस की है ना मर्दों के ऊपर, और जो कि इस केस में बहुत एक्सेसिव है,
वो वैल्यू जब मर्दों को ओवरवेलम कर देती है, और फिर उसमें हमने उनको पैसा कमाने पे तो लगा देते हैं, लेकिन रिश्ते बनाना नहीं सिखाते, संभालना नहीं सिखाते। और तो वो जो चीज है ना, मुझे बहुत लगा कि यार ये बड़ा बड़ा लेसन है आई थिंक पेरेंट्स के हम्म। लिए। और हमारे यहाँ ये भी है कि मेंस मेंटल हेल्थ, अगर हम जैसे, हमने जो मर्द बनाए हैं माशरे ने, जिस तरह के मर्द, मुस्तफा जैसे मर्द, अदील जैसे मर्द, हर तरह के जो भी हम मर्द देख रहे हैं, उसमें नुमैर भी है, उसमें हसन भी है। तो ये जो वैरायटी ऑफ मेन हमने क्रिएट किया ना, इन सब में कुछ जो कॉमन थ्रेड्स हैं वो ये है कि जो एक्चुअल बात है, जो उनको एक्चुअली में बॉदर कर रहा है, वो नहीं बोल रहे मुंह से। वो एक्सप्रेस करने में उनको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, बैरियर है। हसन के केस में बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि हसन के। अगर एक्सप्रेस करेंगे ना, लॉट ऑफ मेन से दैट अगर मैंने बोल दिया तो बड़ी मार पड़ेगी मुझे। मार पड़ेगी, हमारी मैस्कुलिनिटी हर्ट हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये सारी कुछ। मुझे हाँ, लगता है विमेन तो जो है असल बात वो है। इमोशनली ज्यादा हेल्दी होती ही इसलिए है, या क्योंकि विमेन, अब आप वो हार्मोनल कह लें, बायोलॉजिकल कह लें, जो भी कह लें। That is human nature, isn't it? हाँ, We ह्यूमन are नेचर। totally more हाँ intelligent than men. हाँ, वी लेकिन आर, I बट देखिए ना सदफ, अब मुझे लगता है कि हम इसको हम भी एज अ एक्सक्यूज तो नहीं मैं कह सकती, बट एज अ रीजनिंग बनाते हैं कि नहीं हम ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है। भाई तुम so मेरे we'll लेवल take पे all the आओ ना। burden. हाँ, तो मेरे Yeah. लेवल पे आओ ना, मेरे लेवल पे आके बात करो ना। अब हो क्या रहा है कि शर्जीना अकेले बैठ के रो भी लेती है, अपनी अपने अपने आप को, अपना शायद वो भी अपना ग्रीफ। उसका भी थोड़ा सा है कि she has made self sacrifice, जो है ना, कुछ ज्यादा ही वर्च्यू उसने बना अच्छा, किसी ने लिया। मुझे कमेंट में भी लिखा है कि वो Yeah. ये उसने इमेच्योरिटी की है कि उसने, और आई थिंक हमें उस पर बात करनी चाहिए सदफ के, ये Yes. हाइपर इंडिपेंडेंस जो औरतों के अंदर पैदा हो जाती है। और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, जैसे आपको द वर्ड यू हेट इज ट्रॉमा, बट हाइपर हम्म। इंडिपेंडेंस इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग बर्डनड विद ऑल द expectations of a family as the firstborn child, it can be traumatic. So हम्म। when you are like that, when you're geared like that, when you're wired like that from childhood, जब आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं उसमें आपकी रिलेशनशिप में वो जाके जिस तरह पैसे मारती है ना, आई स्वेयर टू गॉड, आई कैन टेल यू दैट दैट इज मी। आई हैव डन दैट विद माई हस्बैंड इन माई फाइट सो मेनी टाइम, लाइक ठीक है, नहीं चाहिए, तुम रखो पैसे अपने, मैं खुद कर लूंगी। you know and it's not something which I am just saying, I actually mean it very seriously. And he gets upset, he's like तुम क्या बात कर रही हो, and men get upset like मैं जो कुछ कर रहा हूँ बट तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तो ये एक कॉमन मोटिव है मैरिजेस में, एंड आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा, और Yeah, जितने इस very वक्त, common. I've been through this. है ना। It's a normal part. अच्छा, this is the thing. It's a normal part of marriage. एक हम्म। adjustment होती है, और every now and then एक adjustment period आती है, and हाँ, I बट सदब think आप एक फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड हैं, आप yeah. एक, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट आप एक एल्डर, जैसे हमने Yeah. जो बात की थी, आई थिंक वी एंड आई नीड टू एक्सप्लेन हाउ दैट डायनामिक वर्क्स। जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्यों नहीं, वो चली गई अपनी अम्मा के घर, उसने क्यों पैसे वापस कर दिए, उसने मुस्तफा का वेट क्यों नहीं किया, वो क्यों अगर मैं गुस्से में थी। वॉइसेस इन योर हेड, अगर हम्म। मैं सब्र कर लेती, अगर हम्म। मैं चुप रहती, हम्म। अगर मैं इसकी बात मान लेती, हम्म। अगर मैं फलां की बात, क्योंकि सोसाइटी इज पाउंडिंग यू विद दोज मैसेजेस, राइट? हम्म। हम्म। बचपन से आपको ये मैसेज, अगर मैं, हम्म। एंड दिस इज व्हाट इज द सो अनोइंग थिंग इज कि यू फॉरगेट हु इज इन चार्ज। अल्लाह इज इन या। चार्ज, नॉट हम्म। यू। हम्म। You can do लाखों करोड़ों things, and it's not necessarily going to turn out exactly the way that it should. हम्म। लेकिन वो जो feeling of responsibility eldest child को होती है, and let me say this as well कि हम्म। I think we're missing this with men as well. चलो, हम्म। मुस्तफा के case is like we can see obviously, हम्म। but men particularly in the diaspora, I think they have a strong feeling of अब now मेरा job है ना, जो मेरी माँ के बचपन की मासी का बेटा के बेटे की शादी है ना, वो हम्म। मैंने करानी है, हाँ। क्योंकि मैं तो यहाँ मिलियनर बैठा हूँ, हाँ। right? So sometimes, and this is maybe a specific diaspora problem, right? हम्म। What happens is that the men, okay, you're doing well for yourself, but हम्म। वो suddenly ये होता है, भाई वो जो सारी उम्र गुजारा कुछ लोग कर रहे थे, अब नहीं उनका गुजारा हो सकता, बिकॉज दे हम्म। मस्ट हैव फर्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। थर्ड वर्ल्ड हम्म। स्टैंडर्ड्स तो वो जी नहीं सकते, एंड हम्म। दैट्स maybe that's a specific diaspora problem. So you'll find that men will go out to work to हम्म। send money back home, even हम्म। though जो उनकी जिंदगी है वो बिल्कुल ठीक है, बैक होम भी ठीक है, लेकिन हम्म। वो एक आइडिया बन जाती है कि नाउ आई हैव टू लिफ्ट them up to the same level, हम्म। and so men have their pressures. हम्म।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दे डू। बट आई थिंक जब हम शर्जीना को ब्लेम करते हैं ना कि वो क्यों नहीं गई, मैं उस पर थोड़ा सा डिफेंड करना चाहती हूँ शर्जीना को। हम्म। मैं ये नहीं कह रही कि शी एक्टेड इन द मोस्ट मैच्योर वे, नो ऑफ कोर्स इट वाज अ फाइट, इट वाज अ हीटेड मोमेंट, इट वाज एन एंग्री टाइम, शी इज अपसेट, शी इज हार्मोनल, शी इज डिप्रेस्ड, शी इज अलोन। She is being the good girl, which she has हम्म been taught to all her life. देखो हम्म उनकी तीन बेटियां, फरहत इश्तियाक ने हमें सिनारियो दिखाया, तीन बेटियां, एंड शुरू में आपने देखा है बीच वाली बहन जो है उसकी शादी उसकी भी हो रही होती है, और जीना कहती है, नहीं मैं तुम्हें ले देती हूँ, कोई बात नहीं, या जैसे मेरी बड़ा। चीज इसको दे दें, मेरे पैसे से इसको यस। खरीद दें जो भी इसको चाहिए, हाँ। हम्म। तो So, नहीं and ये। then built हम्म up ho raha hai, an image of someone who is always giving. And this, हाँ unfortunately, with the eldest child, mostly it is. But what they don't realize is it's like they also have noticed, and this a lot with single parent families in particular, they हम्म circle the wagons, right? हम्म And what happens is because they feel that they don't have other people to depend on, I हम्म can only depend on myself. So हम्म therefore, they become this hyper, I think, almost masculine attitude. I या don't need anybody's help. हालांकि हम्म फेमिनिन जो एनर्जी होती है वो वल्नरेबल एनर्जी होती है, एंड दे हम्म डू आस्क फॉर हेल्प या इन एब्सोल्युटली। ट्रेडिशनली से कि नहीं आई हैंडल इट माई सेल्फ ना। असल में फ्लाइट और फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स होता है आपका, हम्म जब कोई आपको ट्रॉमा, इनिशियली मैं बिल्कुल आपको बेसिक बायोलॉजिकल लेवल पे बता रही हूँ कि ह्यूमन बींग्स का जो हम्म। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, उसमें आपके दो तरह के नर्व डिविजन होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं। तो फ्लाइट में एक डिफरेंट तरह का होता है, फाइट में डिफरेंट तरह का होता है। तो जो हमारा फाइट रिस्पॉन्स होता है ना, जब वो मुसलसल एक्टिवेटेड रहता है, तो आप उस हाइपर एक्टिव एनर्जी में हर वक्त रहते हैं कि आपको कॉन्स्टेंटली फाइट बैक करना है सिचुएशन पे जहाँ पे शायद फाइट जरूरी भी नहीं राइट, होती। ऑलवेज ऑन द बैक फुट। Front foot, always on the front foot, trying to always अच्छा, ready to take a fight, और na ready. डिफेंसिव, I don't know, in England we say someone is always on the back foot because they're ready to defend themselves. Okay, in my head it's always on the reverse. I'm on the back foot when I'm Okay. like trying to avoid, like I'm not trying to pick a fight, Okay. but I'm on the front foot if I'm like trying to take something head on. So anyway, semantics, but point ये है कि जो हमारी बेटियां जो इस तरह की होती हैं, जारा जैसी, शर्जीना जैसी, जिनको हम ये बार बार बता रहे हैं कि आप बेटा आप हर चीज कर सकते हो, एंड यू नो इट्स सो सैड, बिकॉज हमें ये बताना चाहिए बेटियों को, हमें ये सिखाना चाहिए बेटियों को कि बेटी यू आर नॉट लेस देन एनी ह्यूमन बीइंग, आप ठीक हो, आप अच्छा कर रही हो, आप बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन आई थिंक कि कहीं कहीं बेटियों को ये भी, जब वो स्पेशली जब मैरिटल सिचुएशंस में पहुंच जाएं, तो कहीं कहीं हमें उनको उनकी जो कि हम निगाह जितनी केयर रख सकते हैं, वहां पे भी हमें उनको थोड़ा सा ना सपोर्ट, उस तरह की एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे मुझे शर्जीना के बाप का थोड़ा, हालांकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बाप है, वो बहुत समझदार आदमी है, अच्छा नहीं, बाप है। लेकिन he is placing a burden, right? Not ये जो just, no, no, बार no. बार He's कहना, again putting value on yeah, money, which is a very man thing to do, which is the what the mother kind of tells him कि look, this is not what she needs right now. मैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, उसका फिक्सेड हैट जैसी पुट ऑन वो करता है, तो वो उसका सोल्यूशन ही है, पैसे दे देता हूँ मैं। अगर वो शायद कभी उसकी अपनी बेटी की शायद फोन पे कभी उससे बात करके उसकी दिलजोई कर देता ना, तो वो उसके लिए मे बी दैट वुड हैव गॉन अ मच you लॉन्गर know वे। what reminds me that of, do you remember Dureshawar में अब्बा या के खतून? या That बाकी was a खुद। big deal. People were angry at Dureshawar, but I really liked that drama हम्म because it compared the differences. And, हम्म one of the people, the couple that was ignored was Shandana and Heather. हम्म उनकी स्टोरी हम इग्नोर करके ना तो हम रोते रहते थे दुरेशवार और उसके मियाँ के लिए, क्योंकि हम्म but Shandana and Heather were an interesting couple. Sometime we should talk about them. हम्म But and brilliantly acted by everybody. हम्म What I'm thinking about is what we mean when we say we support a relationship हम्म is not throwing money at it. Sometimes, Yeah, 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 yeah. Isn't he doing the same thing Mustafa is doing? कि just I'll yes, ये तुम्हारे 20,000 रुपए, जाओ जाके very तुम good डॉक्टर को दिखा point. लो। Yeah, so Very good point. what I think that men also, and you know like Jaffa के अंदर, although I think Jaffa में the parents are almost near perfect and how they should have acted in a situation like that. Yes, Zara's parents. Zara's Yes, पेरेंट्स, सॉरी, या तो जफा में तो वो ठीक कर रहे हैं, और अब्यूसिव जब बेटी इस तरह सिचुएशन में हो, तो आपको वाकई यू हैव टू डू एवरीथिंग, एवरी पुल एंड मसल जस्ट टू पुल हर आउट ऑफ देयर। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हमें रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे हम जाने की कोशिश करें, हम ये कहें कि मैं अगर होती शायद
अल्लाह ना करे अगर मैं होती जारा की माँ, तो मैं जारा को बोलती, मैं कहा जारा वो तो थेरेपी नहीं ले रहा, तू ले ले बेटा 2-4 सेशन, तू तो फिगर आउट Yeah. करके व्हाई डू यू वांट टू स्टे विद अ मैन हु इज सो क्रेजी. What is making you? What is Yes. making you stay there? You know, you are so busy trying to build this man. Have you thought about what's wrong with you? Why are you, Yeah. Why is it your job? why is it your Yeah. job? So I think that somehow we again place so much value on social messaging, on money, social messaging when it comes to women, and money when it comes to men, that we forget that at the end of it, at the basic, very basic level, we're human beings filled with these jumbled chemicals inside us running amok. So for us to kind of deal with that, we need that emotional support and guidance and holding on, which we Yeah. don't get. I want to ask you a question. I think we've discussed that psychology. Do you think like that this was necessary, this party scene? मुझे थोड़ा सा odd लगा, very Hmm. filmy. कि Hmm. now in क्या नाम है, but Rubab is going to expose and humiliate Hmm. uh, her husband in public. It's a very Rubab thing to do. And Hmm. then again, I'm thinking this is like a पुरानी Pakistani film. You know, Yeah. सबको बुला के तुम्हें जलील जो करती. बचा था वो सुनाने के. So I हाँ. mean, I think filmy to hai for sure. And of Hmm. course, it's all got us. And I hate the dress. Yes, you've mentioned that. Badar Mahmood, please I don't just in pretend. case somebody missed it, I hate the dress. Yeah, Philosophy. hyper independence, right? I think some women have become that way. They think they can be fix everything. And we Hmm. see it in Zara, and we Hmm. see it in, as you pointed out, we've Hmm. seen it in Sharjeena. Hmm. Sharjeena is not reaching out to her friends. She's Hmm. not reaching out to her parents. Rose baat hoti hai, mother is worried. Hmm. Lekin, what it is she's so afraid of ruining her relationship, and she's so afraid of not being perfect, not being the one. And I'm not ridiculing this. This is a हाँ. very deep, I mean, I hear stories of women that उनकी सासें बड़ी जालिम थी or whatever, right? And they're like doing things, बड़े बड़े पतीले और धो रही हैं, जैसे वो नूर जहां में उन्होंने दिखाया था. Hmm. नूर बानो is वो झाड़ू और पोछा और वो सब, which is she's not built for, she's not used to, she's doing all of that to show her सास कि I can do it, एक right? ऑल्सो एक और बहुत बड़ा Yeah. प्रॉब्लम Yeah. इस सिचुएशन में क्या होता है कि वी if we look back, this is a Mm. decision that Sharjina took. Okay. Mm. So one more thing which confident and powerful women kind of fall into a trap of is their own ego. And it's not a bad thing, with our egos are what save us. So Mm. उसने ये कहा था शुरू में अपने बाप से कि प्लीज बाबा मुझे ये करने दे, मैं आपकी इज्जत बचा रही हूँ. तो आई थिंक एट सम लेवल जो उसको शेम शायद, दीज आर माय थ्योरीज, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ वुमन हु इज काइंड ऑफ लाइक शरीना, बिकॉज आई अगेन बिलीव कि नहीं, अच्छा तुम्हें नहीं पैसे देने तो मत दो, मैं खुद रख लूंगी, मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद करूंगी सब कुछ. एंड आई ऑल्सो हैव दिस हॉरिबल फिक्सेट प्रॉब्लम. सो आई थिंक के होता क्या है कि जब आपको लगता है कि आपने एक पंगा खुद लिया है, तब उस पंगे में जो मसाइल हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि अब वो लोग तो यही कहेंगे ना, द फियर ऑफ बीइंग, आई थिंक आई टोल्ड यू सो. आई थिंक वो फियर एक होता है, और फियर के बेटा हमने तुम्हें कहा था मत करना, ये आदमी तुम्हें ऐसे रुलाएगा, तुम्हारी Yeah, जिंदगी में. it's a perfectly natural thing to fear हम्म. कि लोगों ने कहना we told you so, या हमने बताया नहीं था. कहा था So मत करो. that's a natural thing, and also she loves Mustafa. I think we are forgetting this thing बार बार. हम्म. जब आप किसी से प्यार होता है, चाहे they deserve it or not, right? हाँ. You tend to defend them. You will build castles for them. You या. will build defenses and walls कि नहीं ये उसका कसूर नहीं है. And it's not just women, men हम्म. do this too. या. Whereas you can usually tell when someone's in love because हम्म. they will not defend that person, right? हम्म. कुछ हम्म. शादियां होती हैं and they will say yes, he's terrible, right? हम्म. And you get the idea that this person doesn't love that person after हम्म. a while. And हम्म. you can हम्म. see someone honestly, and yet you can make excuses. I think women in particular are particularly good historically because we have not had financial freedoms historically. But men do it too. Yeah, We historically we can haven't. gaslight ourselves. तो हाँ. नहीं उसका कसूर नहीं था, नहीं वो उस तरफ वो ना हवा यूं चल रही थी और गर्म थी, उसका मूड चांद इस खराब हो तरह का निकला हुआ था वो ऐसे हो गया, वरना बाकी के टाइम तो वो सही रहते हैं. गया. स्वीट है, बहुत हाँ. अच्छा है. हाँ. लेकिन that is normal, that is, and this is why the writing perfect. And thank you Badr Mahmood. Apart हम्म. from the green dress,
good direction द and ग्रीन ड्रेस इज नॉट बीइंग फॉरगिवन, बदर साहब, आपको उसका तो नहीं, करना I'm पड़ेगा sorry, कुछ। God, हाँ आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर इसको क्यों लाए हैं? Anyway, हाँ। nobody else cares, it's just me, it's this No, I vendetta think that I between think me Badr and her. Mahmood has like that moment where she cries alone, the cries echoing Hmm. through a small Yes. sofa जहाँ पे home लिखा हुआ है, heart बना हुआ पूरा है। शो बदर महमूद ने उठाया हुआ है, he's और done a उसके great बाद ना job. कोई एक्सक्यूज नहीं Hmm. बनता किसी आगे के शो हाँ, को डिजास्टर this is बनाने the वाला। smoking gun के, you could do it. You can do, My you did man, it, you can do it. you Ab can no do it। bahane. Right? Yeah, अब नो And बहाने। even that scene where you mentioned that Fahad Mustafa was sitting outside and looking at that child, and the tears came to his eyes. Brilliant. हम्म Excellent. हालांकि it was an inserted scene, like you हम्म understood. And I think the whole show is very laudable. Let me say, I keep forgetting because I'm just terrible person. I हम्म think Anya की तारीफ मैं भूल जाती हूँ. Anya is doing हम्म fabulous. Okay. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, And वो if अपने Anya वो wasn't, अपना गेम अप करती रहती है हर हर yeah, शो के साथ। if Sharjeena wasn't working, this whole show would या fall फॉल apart. फ्लैट, फॉल फ्लैट, Yeah. फॉल फ्लैट। और So, आई थिंक कि जो मोमेंट्स है ना, कुछ मैं कभी कभी दोबारा एपिसोड्स पुरानी mm, देखती हूँ, कुछ मोमेंट्स इतने right. प्यारे हैं, एंड यू Mm, फिगर आउट कि वेयर डिड दे फॉल इन लव, व्हाट वाज दैट मोमेंट। And again, it's not about the physical intimacy, it's not about the big fights. There are small moments that make you fall in love with the person, even though you wanna like, क्यों? There is a moment where they're looking at each other जब उसका बाप बीमार होता है, and right now they're mm, still like friends, so there's no actual romance there at all. And the first time, I think it's one of the few times that he looks at her and he's like, oh my God, she's so, I love her. You can see it in his eyes where she says, okay, look, you can use my money. I can sell my jewelry. We can help your father and everything. And he doesn't take that money. And while it becomes his undoing, I applaud him for never using his wife's money, because that shows strength of character. It shows that the man is ready to take on the hard work. What he's done is he's overdone it. सो वो तो एक yeah. अलग प्रॉब्लम है, लेकिन वो मोमेंट जिसमें वो बैठ के कहती है ना कि But मेरा, that's a good story, isn't it? हाँ That's वो तो good गुड स्टोरी है, writing. दैट्स अ गुड राइटिंग। मतलब कहीं तो लेके जाना है ना, अगर सीधा कैरेक्टर होता फिर Yeah. हंसी खुशी सब रहने लगते, तो फिर फिर तो कोई पंद्रह एपिसोड में ड्रामा ही ना होता. 15 एपिसोड में अच्छा, खत्म हो जाता। what do और you think? जी, Sorry, go ahead. What do नो, you think of Adil? Adil isn't stupid, right? Queen Rabab वही is बाबा। back. Acha, I saw some tweets where people say, I want to be Rabab. And I said, no, you don't No, want to be you a snake. don't. No, You do you not want to be don't. a snake. No, He's a no, and I snake. don't He just like has to Rabab. Okay, eat let's, dirt. okay, yeah, हाँ. because I saw so many memes and tweets and like, वो ठीक है, लोग टंग इन चीक बैंटर में कह देते Yeah, yeah. यार ये, भाई ना मुझे बुशरा अंसारी को देख के खुशी हो रही थी, मैं आई एम वन ऑफ द Yeah. माइनॉरिटी में हूं मैं, ना मुझे रबाब को No, देख no, के, I'm with you. I या do not like मुझे her कोई character. खुशी नहीं, मुझे कोई She खुशी नहीं hasn't हुई। suffered enough. No, I'm on the other side. I'll tell you why. I Hmm. also, ना मुझे रबाब को वो अपने यो बिहेवियर में आके मुझे कोई हुआ कि ओ अब ये रिवेंज लेगी अदील से। एक चीज मैं सोच रही थी आज ड्रामा देखते हुए सदफ, कि मिडिल Uh-huh. क्लास की कहानी है, एक मिडिल क्लास के अंदर जो एस्पिरेशंस होती हैं, एंड आई थिंक कभी मुझे और आपको इस पे बैठ के बात करनी चाहिए अलग से, क्योंकि अब तो हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं, बहुत देर से बातें कर रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है ना सदफ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जो मोरालिटी होती है, इट्स अ मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट। जो एक Hmm. मोरालिटी हम क्योंकि बिल्कुल अपर क्लास में नहीं होती और बिल्कुल लोअर क्लास में नहीं होती, ठीक है ना। इसमें रबाब उसको टॉन्ट भी करती है कभी कभी अदील को कि ये तुम लोग की हर बात पे ईगो क्यों हर्ट हो जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास वो वही होता है और कुछ नहीं होता है। वो एस्पिरेशन में ही लगे होते हैं, उनको वो गरीबों जैसा बनना नहीं होता और अमीरों के बनने की वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो सब कुछ उनकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटरनल वर्ल्ड जो उनका होता है ना, उनके लिए बहुत क्रिटिकल होता है। वो स्ट्राइविंग ही उसके लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ना उनको आसाइशें पूरी मिली होती हैं, ना वो उससे पूरे डिप्राइव्ड होते हैं। तो मिडिल क्लास के अंदर जब अदील और मुस्तफा जैसे और शगुफ्ता जैसे लोग होते हैं, शगुफ्ता ने जिस तरह से अपने मियाँ को वो किया होता है कि रिस्पेक्ट उसकी उनकी उनकी उस तरह नहीं की होती। हाँ, शी इज अ ड्यूटीफुल वाइफ, शी टेक्स केयर ऑफ द हस्बैंड एंड एवरीथिंग। पर मिडिल क्लास के अंदर जो ये औरतें होती हैं There's जो no कि love, there's no kindness in there's that no love woman. and kindness, it's just how to get the bills paid, how to get sabzi on the table and the roti and the paratha। मिडिल क्लास फैमिलीज में ना ये जो फिक्रे माश है, ये जो गमे रोजगार है, ये बड़ा क्रिटिकल है, ये पर्सनैलिटीज तबाह कर देता है। तो आई थिंक ये Yeah, कॉशनरी टेल है उस तरफ कि देखो आप, एक माँ ऐसी है फिर बेटे ऐसे। तो अदील का जो कैरेक्टर है ना, जब वो अपने देखें, वो अपने बाप का ख्याल करता है और वो रुबाब से इस प्रिटेंस में शादी करता है कि मैं आप हम सबकी जिंदगी सुधर जाएगी, यू नो। तो right. मुझे लगता है कि ये इतना डीप डिसेप्शन है, सेल्फ
से, अपनी सेल्फ से, अपने ट्रू सेल्फ से अवे होने का इतना डीप डिसेप्शन है जो मिडिल क्लास फैमिलीज में है, कि वो जो अगेन फरहत की राइटिंग की ब्यूटी और जो पूरे कहानी को समझने की ब्यूटी, प्रॉप्स टू ऑल द एक्टर्स एंड द कैरेक्टर्स एंड ऑल द टीम, के जो आपके अंदर का जो एक इंसान है जो कि बहुत थोड़ी चीजें चाहिए उसको, तो ये जो आपने बना दी ना, मैं बड़ी गाड़ी, बिजनेस, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, नथिंग इज इनफ, that is something that is so deeply insecure of you as a middle classiya। जो अदील के अंदर का जो मिडिल क्लासिया है ना, तो वही चीज जो उसको शगुफ्ता के अंदर से आई है, और ये जो ये नया अल्फाज है ना। एक हमने बनाया था लिटिया, फिर एलिटिया, हमने बनाया था इंस्टाफैम, अब इंस्टा, मिडिल क्लास या। हाँ ये मिडिल क्लासिया जो इसके हम अंदर के हमारे पास आए, हम हमें आपको नए 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 अल्फाज, अल्फाज से नए आपको, नए एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस और अल्फाज से आपको आपको रोशनास कराएंगे। हम्म। तो ये जो इसके अंदर का मिडिल क्लास है, ये एक मलेज है, ये एक डिजीज है। और ये सिर्फ अदील नहीं है, ये एक हमारी पूरी जो अनफॉर्चुनेटली या स्ट्रगलिंग बर्जेंड मिडिल क्लास है ना, विद दिस कांस्टेंट कंज्यूमरिज्म। सदफ लाइफ ऐसे पहले नहीं थी, ये कुछ नए प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। well, अब it is. We see on our screens, and I हम्म, think that कौन सी उमेरा अहमद का जो ड्रामा था, it was a little choppy in its quality. जन्नत से जिसमें आगे। जन्नत से आगे, हम्म। that explained it a little too easily. वो because यूजली एंड आई थिंक दे फोकस्ड ऑन द होल ग्लैम शैम पार्ट अ लॉट, बट उसका मैसेज yeah, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा मैसेज था उसका। very good message, and it was about ke ye they were alive before, they might even actually have been a little happier even हम्म। though they were struggling. And हम्म। Ramsha's character was a great character. She हम्म। was kind, she was हम्म। loving, and शी वाज turned हेल्पफुल। into a monster या शी because टर्न इनटू मॉन्स्टर। she says to her fiance, who I admit was annoying, but हम्म। she said, मेरी अब जिम्मेवारी बन गई है, मेरी बहन को पढ़ाना, भाई को हाँ, तो वही मैं जो ये बात कह रही थी ना सिर्फ वही। आपसे, कि Yeah. ये जो हम जरूरतें बनाते हैं ना, ये हम Hmm. अपने अंदर की जो कमियां हैं ना, उनको छुपाने के लिए ये जरूरतें बनाते हैं। True, true, ये true. बात जो आपने कही ना, ये बिल्कुल उसी से टाई इन करती है। Yeah. और ये, So, जी, do you think we should move on to another drama before? या आई थिंक बिफोर पीपल आर लाइक बस कर दो, कितना बात करोगी, बस Yeah, हमें पसंद ही इतना है ड्रामा, हम क्या करें, हमें yeah, बहुत अच्छा it लगता is है। so और well written. so well written, so well done, or all our grouses aside with green dresses, we do love the drama, and we want to. I don't know why people think I don't give Hania the props that she deserves. She is absolutely wonderful as Sharjeena. Do I feel Yes. like she's as good as Fahad Mustafa? No, but I do feel that she's doing a fab job. She has done that that manic pixie dream girl away with. She's doing a serious modern ladki, but I think it's also because she is a serious modern ladki, not serious maybe, but a modern ladki, तो वो इतना फिट बैठा है उसके ऊपर ये रोल। तो प्रॉप्स टू हर, प्लीज ये मत समझे हमारा कोई बुग्ज नहीं है किसी के साथ। एंड Sadaf, I want to quickly finish up with Zard Patto Ka Ban. तत्पतों का Guys, बन। I know we have more dramas. What Sadaf and I are planning is that we'll do a separate session. Sadaf, हम किसके ऊपर अलग से बात करेंगे, आप बताइए। Well, I still want to do about Dunyapur, Hmm. and I don't know what else. Ghair I think deserves a I little bit sun of mere dil I attention. want to discuss also Yes, in please. depth, But I definitely. want to watch it first, and then Hmm. can we? What we might do is, as we are saying, can we do a little short one for 10 minutes Yeah, or we'll do 3 minutes? that. We'll definitely do Yeah. that for a couple of shows that we've been trying to kind of tackle. Hmm. But because ये इनके इतने सब्जेक्ट मैटर्स इतने ब्रॉड हैं, इनके आगे पीछे डिस्कोर्स इतना ब्रॉड है कि हमारा सारा टाइम ये खा जाता है। बट हम डेफिनेटली इस पे एक छोटे छोटे कुछ सेशन जरूर करेंगे। तो सर, जस्ट रैपिंग अप विद जद पत्तों का बंद, द एपिसोड इज, Hmm. लास्ट एपिसोड इज कमिंग ऑन संडे, विच इज लाइक 3-4 days फ्रॉम नाउ। सेकंड लास्ट एपिसोड एयर हो गई है। छोटी सी बात जो मुझे इसके बारे में ये करनी थी, कि आई थिंक जो बहुत सारे लोग जो उसको देख के कहते हैं, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, तो वो हम तब आंसर करेंगे जब हम ड्रामा पूरा देख लेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है कि ओवरऑल उस मैसेज, उस पूरे ड्रामे की थीम ये थी कि व्हाट इफ पीपल डिड द राइट थिंग। दिस इज माई Hmm. टेक ऑन जर्द पत्तों का बन, कि व्हाट इफ वी हैड अ मैन, अ फादर who didn't berate his daughter, didn't kill his daughter when she told him, I want to marry this boy. What if we had a man who stood up वो to भी her, गांव में रहने वाला गांव में रहने फादर। वाला, कुक्कड़ And कुक्कड़ लड़ाने वाला। right. Yeah. What if we had And a, believe it or not, it may be not as rare as we think. Sometimes we yeah. shock ourselves with the Yeah, people yeah. that. And sometimes we don't know these stories that well. Sometimes we have glossed them over with what we've heard on the news, you know. Mhm. So I think what if like a doctor did the right thing? What if the doctor stood up to the powers that be? What if communities stood up and did the right thing? What if communities didn't lynch each other? What if a local politician, even if he was a bit stupid, he ended up
saving somebody inadvertently, unwittingly. So I think कि कुछ हद तक उस ड्रामे की जो मैसेजिंग है वो बहुत आइडियलिस्टिक व्हाट इफ मेबीज वाले में है. My concern now, and now I'm sad because now that I've picked up on this, I think that's what the writer was going for. I wish that it had been evident from day one, because it would have made for such a killer motive to run through the whole. Hmm. Like in my head, like what I would have probably done is that I would have had a, like, maybe multiple dream sequences where Meenu is maybe dreaming of going to school or college, but somebody stops her and sends her back. But then she wakes up and she has a bicycle out there. And then Nofil may have been cooking, those scenarios could have been given to Nofil ke dekho aisa ho jayega, aisa ho jayega, and he's thinking that हाँ कोई lynch mob आएगा मुझे ये कर देगा वो करेगा. But then when he sees, when he just snaps out of it, he sees somebody helping him out. I think that messaging, that whole idea would have been given to the audiences in a much better way. That's my take on it. So yeah, we'll discuss I, more when it ends. I think a lot of people are talking about the scene between the father and the daughter. Hmm. And I agree, wouldn't it be nice? But I mean, like, I think we have a habit of thinking कि हाँ जी गांव में है जाहिल है, Hmm. whereas sometimes they can actually be more supportive, Yeah. and because they believe in their child. Hmm. Whereas some people जो कहने को अब दीपू के पेरेंट्स ही देख लो, Hmm. and they Jahil. they they are the biggest problem for Deepu. They really are. Hmm. Hmm. बिल्कुल सही कहा I आपने. think, and this is like I'm gonna finish up here. Hmm. What you say? Look, हमें वो बताया गया था कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो करेगी. Not everybody is a book smart person. Hmm. Some women are not. लेकिन Hmm. कोई ना कोई talent होता है. Hmm. And I think this pressure, I mean, Dibu's an example and other things. Hmm. Sometimes people mature late, they study differently. Hmm. So the idea that if your daughter doesn't become a doctor or become this super successful person, Hmm. then, she's just fit for a housewife. No, not Hmm. necessarily. कुछ ना Hmm. कुछ talent हर किसी में होता है. Let Hmm. us know all those talents. Let Hmm. us not put this pressure to be the perfectionist, to be the MBA, be Hmm. the, Hmm. because I think sometimes we create another kind of hell for our child. Hmm. Just like, And just to wrap up, agreed with you. I think that sometimes it's even okay if you're not talented. Sometimes it's okay to hmm, middle through, but just be happy. I think that what we forget and what we don't teach people these days in this era of hyper consumerism, of Instagram influencer from throwing stuff at you every which way, TikTok telling you to dance like this, and TV telling you to be in a relationship like this, and there's a red flag and a green flag and a brown flag and a black flag and a God knows what flag next they'll come up with. In this era of confusion, sheer absolute confusion of perspective and thought and identity, I think it's very important that parents teach their children the truth behind what is your true self, what is happiness, what it means to be happy with what you have. content, content, Content. To राजी be हो जाओ. happy. राजी हो जाओ जो है. क्योंकि देखो, तुम अंबानी नहीं बनोगे, अंबानी तुम नहीं होगा, तुम ऐश्वर्या राय नहीं होगे, ऐश्वर्या राय कोई और नहीं होगी, वो केट And she ब्लैंचेट नहीं seems a होगी. little upset at this moment as well. Yeah, well, so everybody's got things to deal with. So वो केट ब्लैंचेट नहीं होगी, तुम केट विंसलेट नहीं होगी, मैं शर्जीना नहीं होंगी, शर्जीना मैं नहीं होंगी, मेरे मियाँ फाद मुस्तफा हो सकते हैं क्योंकि मैंने ये पढ़े किए हैं उनके साथ. सो मेरे कहने का मकसद ये है कि And why not? एंड क्यों व्हाई नहीं अभी नॉट. तक हुए? रियलिटी है, और हम सब इसलिए इसको इतना डिस्कस कर भी रहे हैं डिटेल में, बिकॉज ये बहुत अच्छा, टच करता है. with me the main thing is that देखो, आप ना कुछ चीजें खुदा पे छोड़ें. खुदा हम्म. ना बचे, क्योंकि we have a tendency, जो हम लोग fixed ladies है ना, हाँ. the eldest child, मेरा कसूर, all that kind of stuff. And you see this as a theme throughout. हम्म. Certain things you just can't fix, you just have to हम्म. leave. But हम्म. certain things you can, right? And certain So, things get better with communication, certain things are better right. with therapy, certain things, actually, a lot of things get better with therapy. Like, I'm a huge advocate of that. And certain things are they're just social messaging which you need to switch off. Switch it off in your brain, and you'll immediately find the calm. Last message to Badr Mahmood: Sharjeena deserves more than those t-shirts, I right? think they're cute. I love They it. are, but बस बस हद हो गई. ये नहीं, सबके मुझे पास तो नहीं थी. कपड़े, शर्जीना के पास नहीं है. हैं. इरफान
इतना स्मार्ट कपड़े पहने हुए थे, लव्ड हिज आउटफिट्स दिस एपिसोड। या बहुत लास्ट स्वैग आ वन गया भाई, अब डैन मूसा हो गया अदील भाई तो वो। स्वैग ही स्वैग है। राइट, हाँ। तो बेचारी शर्जीना, खैर इतनी खूबसूरत है हानिया, शी हम्म। नीड्स नो डेकोरेशन, लेकिन थोड़ा सा उसका भी वार्डरोब का ख्याल रख ले। नहीं, मुझे तो सही लग रही है, मुझे फिट लग रहा है, बट एनीवे लेट अस नो व्हाट यू थिंक, आपको कैसा लगा ग्रीन ड्रेस, इसके ऊपर पोल होगा। डिड यू लाइक रबाब्स ग्रीन ड्रेस, डिड यू नॉट लाइक रबाब्स, यू हैव टू टेल अस इन द कमेंट्स गाइस, बिकॉज सदफ को ट्रिगर करने के लिए यही काफी है। कोई और बात करे ना करे, ये जरूर बताएं कि आप। मुझे ना मैं याद आता है, राइट, आई वाज मैंने वाचिंग तो नहीं मैं देखा, आई गिव अप ऑन। रेगुलरली एंड आई वाज लाइक कुछ बनेगा अभी, कुछ ठीक होगा अभी, कुछ बनाएंगे नहीं। I think that script was a mess from the first get-go, and like it was so wrong because it was marketed and promoted as, oh, we're going to talk about bipolar disorder. I'm या like, but you're not. You're not. So, like May was a huge disappointment in terms of writing anyway. And I feel like all of our writers, while they are brilliant and amazing, and I have so much respect for almost like all of them, I think that all of you guys maybe need to just take a little bit of Psych 101. Just take a course online ले लो, Coursera पे देख लो, कुछ कर लो, Domestica पे देख लो, एक कोर्स ले रिसर्च, लो, रिसर्च थोड़ा थोड़ी सा, सी research. हाँ, क्योंकि while their own instincts of how a character is going to be is great, and I love To it. be fair, to be fair, the writer didn't say this. Hmm. I think Isa put this out on her Insta, and I think Yeah. our artist needs to think very carefully before using such My terms. God, yes. My God, yes. Like, please do not use mental illness or personality disorders to sell a product that too half baked. या तो आप सही में दिखा रहे हो और फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो उसके साथ, तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो ही नहीं कर रहे हो तो फिर बॉस क्या कर रहे हो, नहीं करो ये। Mm. एनीवे, थैंक यू सदाफ फॉर योर टाइम एज ऑलवेज गाइज। आप हमें ये बताएं कि हम कौन से ड्रामास का छोटे सेगमेंट्स पे रिव्यू करें। आप हमें कमेंट्स में बताएंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि हम कौन से ड्रामे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे मैं नहीं देख रही हूँ, बहुत सारे ड्रामे सदफ नहीं Look, देखे हैं। I need you to catch up on Dunyapur because I think there's a lot to be said about that. ओके ठीक Okay? है, And आई people कैच are अप ऑन। requesting it underneath our comments as well. ओके Okay? ठीक है, तो सुन मेरे दिल, दुनियापुर एंड जद पत्तों का बन, which is about to end, then we've got फरार coming up, we've got a bunch of other, I think some people are also watching इक्तदार and a bunch of other dramas. And Nadan. Nadan, I Nadan, think we yes, should talk yes, about people are that. talking about that as well. So I'm whatever I can catch up, I'll manage. Otherwise, I will grill Okay. Sadaf on her watchings. थैंक यू सदफ वंस अगेन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सदफ, आप भी गाइस, आप लोग भी जो देख रहे हैं अपना ख्याल रखिए और थेरेपी पे जाइए अगर जा सकते हैं तो, ठीक है। दैट्स माय साइनिंग ऑफ मैसेज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज। Take care, dear. Hafiz.